हो और राखी गढ़ी के जो एक्सकेवेटेड एरियाज हैं उनको हम डेवलप करके वहाँ हाई एंड म्यूजियम एक्सपीरियंस बनाएं, इसके ऊपर हम पूरे एक कंसोलिडेटेड हॉलिस्टिक प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे हैं। दो तीन छोटे छोटे सवाल, रैपिड फायर जैसे कह सकते हैं। एसआईआर से कितने विदेशी बाहर जाएंगे? जितने होंगे वो सब सारे चले जाएंगे। समय सीमा? समय सीमा के साथ में काम हो रहा है, 12 स्टेट में अभी चल रहा है, बचे में बाकी हो जाएगा। बीजेपी ने सोशल मीडिया पे कहा है ममता बनर्जी हिटलर हैं, पोस्टर जारी किया है, आप मानते हैं? देखिए, मैं हिटलर हैं कि यह नहीं कहूँगा, लेकिन वहाँ का शासन जो है वो हिटलर के शासन से कम क्रूर नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से 2016 के चुनाव में, 2021 के चुनाव में, उस के बीच में और 21 के चुनाव से 26 के बीच में अनेक बार वहाँ इसको महसूस किया है। बहुत बड़ा राजस्थानी समुदाय वहाँ रहता है, उनकी स्थिति कितनी विकट है ये मैं जानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत संपर्क उनसे संवाद है। एक उदाहरण देकर के कि एक व्यक्ति ने मुझे 2016 के चुनाव में भोजन पर बुला लिया। मैं चुनाव पे गया था, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले लोग हैं, एक बिल्डिंग में सारे एक ही परिवार के सभी लोग रहते हैं, कोई दूसरा नहीं है। भोजन पे बुलाया तो शाम को उनके घर पे ममता बनर्जी जी की पार्टी के कोई वरिष्ठ आदमी जाकर के उनको कहता है, कोई लोकल लीडर जाकर के, कि तुमने किसको बुलाया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि किसी को बुलाया। अपने घर पे किसी को भोजन पर बुलाने में भी वहाँ रोक है। उसके बाद में उन्होंने जब दोबारा बुला लिया तो फिर उस जो है उनके घर पे चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन उनके घर पे ताला लगा के बाहर 4 लोग खड़े हो गए, उनको वोट देने नहीं जाने दिया। और जब परिणाम आया तब उनके इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे शोरूम जितने थे उन सब में शटर ऊंचा करके नीचे से पेट्रोल डाल के आग लगा दी। अब इसको आप हिटलर का शासन कहेंगे या मुसोलिनी का शासन कहेंगे या कोई और कहेंगे, या आप तय करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल, राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो क्या देश में रहेंगे, विदेश यात्रा कम होगी? मुझे लगता है कि अगर हटा दीजिए, इसकी कहीं कोई संभावना नहीं है। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री शेखावत जी बने तो सबसे पहली प्राथमिकता, अगर इसमें से भी मुझे लगता है कि हटा दीजिए, जो विषय नहीं है, जिस पर विषय पर कहीं संभावना नहीं है, जिस विषय पर कहीं, देखिए फिर मैं कहूँगा, मैंने इतना लंबा आपको कहा, हमारे यहाँ जो है जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी है उसको उसका काम करना चाहिए। अभी माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की यशस्वी सरकार, डबल इंजन की सरकार, पूरी ताकत से राजस्थान भारत की विकास यात्रा का ग्रोथ इंजन बने, इसके लिए काम कर रही है। और हम सब लोग वो सफल हों और उनके नेतृत्व में हमारी सरकार सफल हो और एक बार फिर हम प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बना सकें, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। निश्चित तौर पर भारत में पर्यटन बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से इंडिगो की घटना हुई, क्या आपको लगता है कि इससे पर्यटन की गति को रोक लगती है? निश्चित रूप से इस तरह के व्यवधान आते हैं, क्षणिक उसके कारण से चुनौती होती है, और हम सब के लिए इंट्रोस्पेक्शन का विषय है, इंडस्ट्री के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, पॉलिसी मेकर्स के लिए भी, कि ऐसी जो है संकट फिर न खड़ा हो, उसके लिए हमको आगे क्या मेजर्स लेने, हमको काम करना चाहिए। आईटीवी नेटवर्क इस मंच पर आए, आईटीवी नेटवर्क के परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत 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 सारा धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम आपका। गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आज आप आए हमारे इंडिया न्यूज़ मंच की, आपने शोभा बढ़ाई। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप मंच पे बने रहिए। बिल्कुल, और मैं चाहूंगी कि कार्तिकेय शर्मा जी, राज्यसभा सांसद। मगर इस खास लम्हा को थोड़ा और खास बनाने के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे विश्व में भारत का डंका बुलंद करने वाली महिला विमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम। बिल्कुल, तो जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए दर्शकों, क्योंकि इन्होंने सिर्फ भारत का नहीं बल्कि एक ऐसी मिसाल पेश की है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। जिस विषम परिस्थितियों में रहकर भी वर्ल्ड कप जीतना अपने आप में एक बड़ी बात, और एक बार जोरदार तालियां बजती रहे। तालियों से आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आग्रह करता हूं कि राज्यसभा सांसद जी कार्तिकेय शर्मा, आप हमारे महिलाओं टीम को भी इस छोटी सी भेंट प्रस्तुत करें, उनका हौसला बढ़ाएं। और ये बहुत ही खास एक फोटो भी होने वाला है हमारे खास मेहमान केंद्र मंत्री के संग, हमारे इन भारत की बेटियों के संग। ये एक बहुत ही खास आपको तस्वीर दिख रही है इस वक्त इंडिया न्यूज मंच पे। बिल्कुल, और ये करुणा कुमारी पंगी, काव्या वी, सीमू दास, जमुना रानी टुडू, अनु कुमारी, अनेका देवी, बसंती हंसदा, सुनीता सराठे,
सिमरनजीत कौर और शैलेंद्र यादव आपको इस वक्त मंच पे दिख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं। इतिहास रचा है। जी हां, भारत की ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम ने नवंबर 2025 में कोलंबो में पहला ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप जीतकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, क्योंकि ये देश की कई बाधाओं को पार कर इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। एक बार जोरदार तालियां दर्शकों। बहुत ही खास एक तस्वीर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं इंडिया न्यूज मंच पे। शुक्रिया अदा। बहुत बहुत शुक्रिया और मैं चाहूंगी कि टीम हमारी मंच पर ही रहे। वादा उन्होंने पूरा किया, जैसे मंत्री जी बता रहे हैं हमें, और आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही एक खास ये लम्हा आप देख रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा जी ने भी इस टीम का अभिनंदन किया था जब वो वापस भारत लौटे थे। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं इन बेटियों के चेहरे पे कितनी खुशी है, कितना रौनक है, मगर इनकी खुशी से ज्यादा हमारी खुशी है। बिल्कुल। और क्योंकि उदय देखिए, ये सिर्फ जीत जो है वो भारतीय खेल जगत में जश्न का माहौल तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, अगर आपने सोच रखा हो तो आप जीत हासिल कर सकते हैं। और वही जीत जब इन्होंने हासिल की तो कहीं ना कहीं एक मिसाल बन गई है करोड़ों भारतीय महिलाओं के लिए, जो अब देखती है कि हाँ, क्रिकेट में अब इस तरह की संभावनाएं। बहुत शुक्रिया गजेंद्र सर आपका भी, कार्तिकेय सर आपका भी। और अब हमारा जो अगला सेशन है वो भी शुरू। Hello and welcome. You're watching Newsx and I'm Vaishali Kohli. Now in breaking news, National Citizen Party's Southern Chief Organizer Hasnat Abdullah warned that India's northeastern 7 sister states would be isolated if Bangladesh is destabilized. Speaking at an all-party protest rally organized by Inkilab Manch at the central Shahid Minar, Hasnat alleged that those creating chaos in the country, attempting to sabotage the election process and involved in the attack on Usman Hadi are being backed by India. He also accused Indian authorities of involvement in border killings of Bangladeshi nationals. He says, I want to say clearly to India that if you shelter forces who do not respect Bangladesh's sovereignty, potential, voting rights and human rights, Bangladesh will respond. He added those who look to Delhi for power and positions are preparing to sell the country's independence for the third time. All right, we are going to try and get you a colleague, my colleague viewers, because he's going to give us some more information on this. But this is breaking news, viewers. Of course, this is big news that we're sharing with you at this point, of course. And now the National Citizen Party Southern Chief Organizer Hasnat Abdullah has warned that India's northeastern 7 sister states would be isolated if Bangladesh is destabilized. Speaking at an all-party protest rally organized by Inkilab Manch at the central Shahid Minar, Hasnat alleged that those creating chaos in the country, attempting to sabotage the election process, are being backed by India. I have Renik Datta joining me with more details. रेनिक, इसके बारे में आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? रेनिक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? Alright, we'll try and reconnect with Renik in a short while. But of course, viewers, this is a big statement coming in. He's spoken, the chief organizer, Hasnat Abdullah, has spoken at the all-party protest rally, and he's alleged that those creating chaos in the country, attempting to sabotage the election process, are being backed by India. I have Renik Datta joining me with more details. Renik, इसके बारे में आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, बांग्लादेश में चुनाव का ऐलान हो चुका है और चुनाव का ऐलान होने के बाद ही अभी बांग्लादेश का जो एनसीपी पार्टी है, जो नया पॉलिटिकल पार्टी तैयार किया गया है छात्र संगठन की तरफ से, उनका जो छात्र नेता, उनके तरफ से अभी जो बयान दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत का जो 7 सिस्टर है वो बांग्लादेश ले लेंगे, और ये 7 सिस्टर को लेकर जो भड़काऊ बयान वो देने के देखा गया है। हसनत अब्दुल्ला जो कि एनसीपी का लीडर है, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। कल एक पब्लिक मीटिंग अटेंड किया गया था ये हसनत अब्दुल्ला की तरफ से, जिसमें ये पॉलिटिकल इवेंट था। उस पॉलिटिकल इवेंट में हसनत अब्दुल्ला की तरफ से भारत के ऊपर टारगेट किया गया है। भारत की तरफ से भारत के ऊपर आरोप दिया गया है कि बांग्लादेश का जो लोग बांग्लादेश का
जो घटा था जुलाई महीने में, जो घटना घटा था उसके साथ जो लोग शामिल थे उनको भारत सपोर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, भारत उनको सेफगार्ड कर रहे हैं, और इसी वजह से भारत को एकदम होशियारी देते हुए उनकी तरफ से कहा गया है कि भारत अगर इस तरीके का काम करेगा तो भारत के जो सिविल सिस्टम है वो बांग्लादेश के तरफ से ले लिया जाएगा, बांग्लादेश की तरफ से भारत के सिविल सिस्टम को छीना जाएगा। ऐसा भड़काऊ बयान जो है वो हसनत अब्दुल्ला की तरफ से दिया गया है। तो इसको लेकर ही अभी जो चर्चा हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था कि बहुत सारे बांग्लादेशी जो लोग हैं, जो लोग प्रोटेस्ट किए थे, उन लोगों की तरफ से भारत के सिविल सिस्टम को छीन दिया जाएगा, इस तरीके का भड़काऊ बयान दिया गया था, भारत के खिलाफ भी भड़काऊ बयान दिया गया था। और अभी इलेक्शन का जब माहौल तैयार हो चुका है बांग्लादेश में, और कुछ ही महीने बाद बांग्लादेश में इलेक्शन होने जा रहा है, ठीक उसके पहले इस तरीके का भड़काऊ बयान, जिसको लेकर फिर से एक बार जो राजनीतिक चर्चा वो चालू हो चुका है। जी रनिक, शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। नाउ इन मथुरा ऑन द दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे, a deadly collision that claimed 4 lives earlier on 16 December has created major damage. We now have visuals of the aftermath of the incident. Officials say at least 7 buses and several smaller vehicles collided with each other in the dense fog around 4:30 p.m. a.m. Pardon me. Visuals show charred remains of buses that caught fire. Cranes were called in to remove them from the road. I have Veer Narayan Sharma joining me with more details. Veer, इसके बारे में आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये मथुरा के यमुना एक्सप्रेस पे हादसा हुआ और हादसे के घटना में 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। अभी भी 41 जो घायल व्यक्ति हैं उन्हें जिला अस्पताल में रखा गया है। 3 जो गंभीर रूप से घायल है वो बर्न वार्ड में, और मेरी जो मौजूदगी इस समय मथुरा के जिला अस्पताल में बर्न वार्ड के बाहर है। और यहाँ बर्न वार्ड में लगातार जो चिकित्सक हैं वो जो मरीजों को, घायलों को उपचार देते हुए नजर आ रहे हैं। और कई यात्रियों का ये कहना है कि जो मेरे साथ यहाँ खड़े हुए हैं कि जिस तरीके से ये घटना हुई, ये घटना के बाद, घटना से पहले बस जो परिचालक थे वो होटल पर रुके थे, और होटल पर रुकने के बाद उन्होंने वहाँ ड्रिंक किया। ड्रिंक करने के बाद इन्होंने बस आगे की तरफ बढ़ाई। करीब आधा घंटे बस एक्सप्रेस वे पर चली और सामने एक बस खड़ी थी, उससे जा टकराई। तो उसमें जो बताया ये जा रहा है जो प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा और जो बस में सवार जो यात्री थे उनके द्वारा, कि जिस तरीके से जो बस उस पर टकराई थी उस समय जो परिचालक है वो उसको बस को ड्राइव कर रहा था, और जो ड्राइवर है उसका वो केबिन में सोया हुआ था। तो जिस तरीके से वो नशे की हालत में था, नशे की हालत के चलते ये बस टकराई, और उसके बाद चीख पुकार मची, और देखते देखते जो बस है वो आग के गोले में तब्दील हो गई। दोनों बसों में आग लगी। उसके बाद में ट्रैफिक जाम हो गया, एक के बाद एक 7 बस आपस में टकराई, और लोगों में चीख पुकार, मतलब बसों के शीशे तोड़कर ये बाहर कूदे। कई लोगों के यहाँ चोट भी है, और मैं निजक को अपने एक्सक्लूसिव पे इन लोगों से बात भी करा रहा हूँ। जो घायल लोग जो हैं वो मेरे साथ हैं। एक बार मैं पूछने को, भाई किस तरीके से घटनाक्रम हुआ था ये बताएं जरा आप अपने मुंह से। बहुत भयानक, हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम बस बाल बचे हैं, बस यही है, भगवान की कृपा है। अच्छा, बस कैसे टकराई थी? अरे ड्राइवर नशे में था, पहले उससे टकराई डिवाइडर से, उसके पीछे जितनी बसें जी, बने रहिए आप हमारे साथ। एंड viewers, we now have breaking news coming in now. PM Narendra Modi is on a 4-day visit to Middle Eastern nations, is all set to visit Ethiopia today. PM Modi during his visit will meet with Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali. The visit is being held at the invitation of PM Abiy Ahmed and marks the first visit of PM Modi to Ethiopia. During the visit, the PM is expected to hold comprehensive discussions with his counterparts covering all aspects of bilateral ties. I have Veer Narayan Sharma joining me with more details. Veer, अब ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इथियोपिया में है, इसके बारे में आपके पास और क्या जानकारी है? वीर, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? All right, we'll try and reconnect with my colleague, but viewers, of course, this is a big day really, because Prime Minister Narendra Modi is on a 4-day visit to Middle Eastern nations and is all set to visit Ethiopia today. Veer Narayan Sharma. All right, we'll try and connect viewers with my colleague again. There seems to be a problem with the phone line there.
But moving on, now in breaking news, Kanyakumari Lok Sabha MP Vijay Kumar has moved an adjournment motion in Parliament seeking an urgent discussion on the severe air pollution crisis in Delhi NCR. We're learning that the opposition plans to corner the government over air pollution and the deteriorating AQI in Delhi NCR. Meanwhile, the government may counter the opposition over the alleged slogans against Prime Minister Narendra Modi that were raised during Congress Vote Chori rally in the national capital. I have Manohar Kesri joining me with more details. Manohar, इसके बारे में आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए बिल्कुल कांग्रेस के सांसद हैं विजय वसंत अपना तमिलनाडु कन्याकुमारी, तो उन्होंने लोकसभा में एडजर्नमेंट मॉन्सून एयर पॉल्यूशन को लेकर के दिया है। जिस तरह से लगातार दिल्ली एनसीआर का एयर पॉल्यूशन जो है सो करीब 500 का बना हुआ है, PM 2.5 लगातार सीवियर खतरनाक लेवल पे है और ग्रेप 4 दिल्ली में लागू है। तो इस मद्देनजर कांग्रेस के सारे सांसद ये कह रहे हैं कि लगातार हमने मांग की है। याद होगा पिछले हफ्ते LOP राहुल गांधी ने भी सदन के अंदर कहा था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये कंसर्न है, इससे लगातार लोगों की सेहत खराब हो रही है, नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज भी एडजर्नमेंट मोशन के लिए और चर्चा की मांग के लिए जो है तो उन्होंने नोटिस दिया है। जी शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। नाउ मूविंग ऑन, नाउ Luthra brothers Gaurav and Saurabh, the owners of the Birch by Romeo Lane nightclub in Arpora, Goa, where 25 people were killed in a fire, are being deported from Thailand. The two brothers are being brought to Delhi, where they will be presented in the Patiala House Court for remand proceedings. So, of course, viewers, this is big breaking news that we're sharing with you at this point. Of course, the owners of the Birch by Romeo Lane nightclub in Arpora, Goa, have been under the scanner since when the fire took place in that nightclub, where, of course, 25 people were killed in that fire. I have Javed Hussain joining me with more details. Javed, ये जो नई डेवलपमेंट है लूथरा ब्रदर्स की, उसके बारे में आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, जानकारी के मुताबिक लूथरा ब्रदर्स को आज जो है भारत लेकर लाने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है और बताया जा रहा है कि दोपहर तक लूथरा ब्रदर्स जो सौरभ और गौरव जो कि फरार होकर जो है वो फुकेट पहुंच गए थे, वहां पर वो छुप गए थे। उसके बाद वहां पर उनको पकड़ा गया और सबसे बड़ी बात यह कि विदेश मंत्रालय की तरफ से उनके पासपोर्ट को रद्द किया गया। उसके बाद इसकी जानकारी जो है फुकेट में दी गई। उसके बाद वहां से इनको एप्रीहेंड किया गया। उसके बाद फिर इनको लीगल तौर पर औपचारिक तौर पर वहां पे पकड़ा गया है। गोवा की जो जांच टीम है गोवा पुलिस की, वो पहले ही पहुंच चुकी है और ये जानकारी मिल रही है कि उसे जो है आज तकरीबन 1:45 बजे के आसपास जो है यहाँ पर लेकर पहुंचेगी गोवा पुलिस। एयरपोर्ट पे टीम लेकर पहुंचेगी। उसके बाद जो गोवा पुलिस की जो दूसरी टीम है जांच एजेंसी की, वो भी दूसरी टीम इस वक्त दिल्ली पुलिस के साथ एयरपोर्ट पे मौजूद रहेगी और वहां से इसे गिरफ्तार करने के बाद सीधे पटियाला कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और वहां से एक ट्रांजिट रिमांड पे बता रहे हैं कि ट्रांजिट रिमांड के बाद दोनों लूथरा बंधु को लेकर गोवा पुलिस जो है गोवा निकल जाएगी और गोवा पहुंचने के बाद इस पूरे जिस तरीके से 6 और 7 दिसंबर की रात जो क्लब में जिस तरीके से वो पूरा अग्निकांड में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, इस पूरे मामले को लेकर जांच आगे बढ़ाएगी। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड नाउ मूविंग ऑन, नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स PM Narendra Modi along with Defence Minister Rajnath Singh paid tributes to the heroes of the 1971 war on the occasion of the 54th Vijay Divas. PM Modi in a post on X wrote that on Vijay Divas we remember the brave soldiers whose courage and sacrifice ensured India's historic victory in 1971. Their steadfast resolve and selfless service protected the nation and etched a moment of pride in history. The day stands as a salute to their valor and a reminder of their unmatched spirit. Their heroism continues to inspire generations of Indians. Defence Minister Rajnath Singh laid a wreath at the National War Memorial. He was joined by Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Chief of the Army Staff General Upendra Dwivedi, Chief of Air Staff Air Marshal Air Chief Marshal AP Singh, and Chief of Naval Staff Admiral Dinesh K. Tripathi. I have Aditya Vadhavan joining me with more details. Aditya, what more can you tell us?
Vishali, if you see, on the occasion of Vijay Divas, definitely what the defense minister has said, what the Prime Minister Narendra Modi has said on Vijay Divas, we remember the brave soldiers whose courage and sacrifice ensured India had a historic victory in 1971. The steadfast resolve and selfless service protected our nation and etched a moment of pride in our history. This day stands as a salute to their valor and a reminder of their unmatched spirit. Their heroism continues to inspire a generation of Indians. So indeed, it's a sort of a remembrance of the people, of the soldiers who laid down their lives for the country. Indeed, and especially on this occasion, definitely there's a lot the armed forces of India have made a great, their power is multiplied, these days, and definitely we could expect the similar in times to come. Vaishali. Absolutely, Aditya. It is really because of the defense forces that we are. It's their valor and selfless service that protects us every day. And now moving on. In the wake of a terror attack in Sydney's Bondi Beach, PM Anthony Albanese has taken to X to make a statement. He wrote, "In the face of terrorism, coming together is the most important thing we can do. Federal and state governments, AFP and New South Wales Police are working together to keep Jewish Australians safe. There's a lot more work ahead for our police, but we'll be with them today and every day with everything it takes. Currently, Australian police are investigating a trip taken to the Philippines by alleged gunmen in the month before the deadly shooting." I have Belly Thomas joining me with more details. Belly, over to you. Actually, the Australia's Prime Minister Anthony Albanese says his government will take whatever act necessary against anti-Semitic crimes after the Sunday's deadly mass shooting. The government is facing mounting criticism for its measures to address the issue. So this terror incident, 2 gunmen had went on a rampage at the Sydney's Bondi Beach on Sunday evening when an event was held to be celebrated, and that was the Jewish festival of Hanukkah. 16 people, including one of the suspects, were killed and more than 40 others injured in the attack. And police say the suspects were father-son duo. The father was shot dead. The 24-year-old son is currently being treated at a hospital. And Albanese has said that the shooting was an act of pure evil, an act of terror, an act of anti-Semitism. He added that his government is prepared to take whatever action is necessary, including tougher gun laws, and crimes targeting the Australian Jewish community, such as arson, have been on the rise since the conflict between Israel and Hamas broke out in the Gaza Strip in 2023. Police responded by setting up a special task force dedicated to investigating anti-Semitic incidents. But the situation shows no sign of improving. The government is facing criticism from the opposition party and other groups for its handling the issue. So the government is kind of looking forward to devise strategies as to how these kind of terror-related incidents can be averted in the future. Larry, stay on with me. Now we have more updates coming in regarding the attack at Bondi Beach. We're learning that 3 Indian international students were injured in the Bondi Beach terrorist attack, according to early reports. Now, at least 2 are believed to be receiving treatment in the hospital. Belly, back to you on this development. Vaishali, at least 40 people have been injured in this shooting incident, the terror attack in the Sydney's Bondi Beach. And we are told that around 3 international students are critically injured and are receiving treatment, and the authorities are doing whatever necessary for them to recover from this time of grief. They are also in touch with their family members as to what can be done for their treatment that they are receiving at the hospital. Meanwhile, people, leaders from the ruling party also are visiting these these patients who are admitted to the hospital, and they are consoling the family members as well. We get to know. Vaishali.
All right, Belly, thanks for joining me. Now, in the latest update in the Brown University shooting case, the second victim has been identified as 18-year-old Muhammad Aziz Umar Zakov. The revelation was made by Umar Zakov's two sisters in Midlothian, Virginia. I have Ajay Chandyal joining me with more details. Ajay, we're talking about the latest update. All right, we're going to try and reconnect with my colleague Ajay, but viewers, in the meantime, let me apprise you of the latest update which is coming in the Brown University shooting case. The second victim has, of course, been identified as 18-year-old Muhammad Aziz Umar Zakov. The revelation was made by Umar Zakov's two sisters in Midlothian, Virginia. I have Ajay Chandyal joining me. Ajay, we're talking about the latest development in the Brown University shooting case where the second victim has been identified. What more can you tell us? Yes, according to information, second Brown University victim identified as 18-year-old Uzbekistan immigrant, Muhammad Aziz Amrok, and the revelation was made by the Amroko, two sisters in Midlothian and Virginia, and that shows that now both of them, they have been identified, and now the thing has to be seen that what is going to happen next, because a person who basically carried out this attack is still at large, and the authorities, they are still trying to nab and trace him. Stay on with me, Ajay. Now, the Ministry of External Affairs releases an official statement on the 16th. Now, India UAE Joint Commission meeting. The statement said that External Affairs Minister S. Shankar paid an official visit to the United Arab Emirates from December 13 to 15, where he attended the 16th India UAE Joint Commission meeting and the 5th Strategic Dialogue in Abu Dhabi. The talks reviewed the full spectrum of bilateral ties, including trade, investment, energy, defense, technology, and people-to-people relations. Both sides expressed satisfaction with the progress of the comprehensive strategic partnership. The UAE reiterated support for the India, Middle East, Europe corridor and India's BRICS presidency. The next Joint Commission meeting will be held in India, and I have Ajay back with me. Ajay, over to you on this. Yeah, it's a very important meeting, and 16th meeting, definitely they have discussed about the trade, business, and other relations between the two countries, and bilateral talks will help both the countries to strengthen their ties in the coming future as well. And India UAE discussed India's Middle East, Europe economic corridor, and UAE also extended support for AI summits in India's BRICS presidency. So that is a good thing, because India is a leading. India is among the leading countries in the world, and especially if you see that for last several years, the way Indian economics growth have increased, and the status of the India is growing in such a level that definitely is also impressing the other friendly countries as well. So definitely UAE also extended its support and for the presidency as well as the other bilateral ties in the coming future. Stay on with me, Ajay. Now, in breaking news, the US President Donald Trump has stated that the peace deal is to end the 4-year-long running war between Ukraine and Russia. And that, of course, is closer than ever. Following ongoing talks between European leaders and Ukrainian President Vladimir Zelensky in Berlin. Speaking at the White House, Trump emphasized that the United States is receiving tremendous support from European leaders, including Germany, Italy, France, the UK, Poland, Norway, Denmark, Finland, and the Netherlands, who also wish to see an end to the conflict. That's, of course, a big statement there, Ajay, from, of course, the US President Donald Trump. What more can you tell us? Yes, Donald Trump, who always claims that he is a man who basically ensuring peace in the world, he once again gives a statement, no doubt that for last several months he is trying for the same. But he once again says that Russia-Ukraine peace deal is close to the end, and but when it is going to happen, that has to be seen. And he says that
things are in the right direction. But the way basically recent attacks and the counter-attacks from both the countries has taken place, that shows that things are not that in control. But Trump is claiming that it is close to the end. So let's see that what will happen. Stay on with me, Ajay. Now, after 2 U.S. service members and 1 American civilian were killed in a deadly attack in central Syria, which the United States has attributed to the Islamic State, Secretary of War Pete Hegseth paid the tribute to the fallen soldiers. Pete, in a post on X, said, "Our hearts go out to their families and we lift them up in prayer for strength and comfort during this time of grief." He added that the United States of America will avenge these fallen Americans with overwhelming force. Their memory will live on through their families, their fellow warriors still serving the country, and his unwavering commitment to war fighters around the globe. I have Ajay back with me. Ajay, what more can you tell our viewers about this? Yes, United Nations, stands with the families of those who have lost their life, and we have seen that in Syria when 3 people have died, including the 2 soldiers of the Russian United States Army. That was really shocking for them, and they say that we will not leave any stone unturned for punishing the people, those who are responsible, and especially we have seen that ISIS was facing the U.S. attacks, U.S. Army action for last many years, but this time they have targeted the U.S. Troopers there. So Pete Hegseth, who is the Secretary of War, he pays his condolences and says that nation stands with them, and definitely we have lost our 2 brave soldiers, those who have laid down their life while fighting for the nation. Thanks, Ajay, for joining me. And now, in a huge relief to senior Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, the Rouse Avenue Court in Delhi refused to take cognizance of a complaint by the Enforcement Directorate in the National Herald case. Special Judge Vishal Gogne said that the Central Probe Agency's complaint filed under the Prevention of Money Laundering Act is not maintainable. I have Sambhav Sharma joining me with more details. Sambhav, over to you. Well, absolutely. It's a big relief to Gandhis in the National Herald case, and this update is from Delhi's Rouse Avenue Court, where Delhi's Rouse Avenue Court, the Delhi court, has refused to take the cognizance of the prosecution complaint, the charge sheet filed by the Enforcement Directorate in the National Herald case. And what the judge said, Special Judge Vishal Gogne, what he said is important here in the National Herald case, and the Special Judge PC Act Vishal Gogne of the Rouse Avenue Court has said, and for our viewers, I'm going to read that. And he said that the complaint filed by the Enforcement Directorate under the Prevention of Money Laundering Act, the PMLA Act, the stringent charges sections leveled by charges pressed by the Enforcement Directorate against Gandhis and others in this National Herald case. So according to the judge, they are not maintainable. The court said the charges are not maintainable. Why? And why is it so? Why is it so? The judges further said that they are not maintainable because it is based on the private complaint filed by by Subramaniam Swamy and not on first information report. Now this becomes very important here. The court has said that this particular charge sheet, the prosecution complaint, is not maintainable. Reason being that it's filed based on a private complaint by Subramaniam Swamy and not based on the FIR. And if I talk about the accused in this particular National Herald case, because it's lots of discussion happened on this National Herald case and alleged role of Gandhis, and the prosecution complaint, the charge sheet alleged Gandhis of certain sections, violating certain sections of Prevention of Money Laundering Act. And apart from Gandhis, Suman Dubey, Sam Pitroda, Young Indian and Sunil Bhandari were also made accused by the Enforcement Directorate in this particular case. Now that the Delhi's Rouse Avenue Court has refused to take cognizance in this particular case, it's a big
big relief to Gandhis from Delhi's Rouse Avenue court. And I also want to add on a few more details to what the court has said. Here the court said that ED may continue the further investigation in this case. So on one hand, the court has refused to take cognizance at this stage because it's the complaint, the prosecution, the complaint was a private member complaint, not based, the investigation was not based on an FIR. But on the other hand, in the National Herald case, the Delhi's Rouse Avenue court has said that ED may continue its further investigation. And the court said the cognizance cannot be taken at this stage as ED cases based on private complaint. And the magistrate's summons order and not on any FIR. So in a way, the Delhi's Rouse Avenue court has given relief to Gandhis and said that this particular prosecution complaint was not based on the FIR. But what is one more thing I want to add on here is, and from all right, what Sambhav, thanks for joining me. Now, in the latest updates coming from MEA, India-Jordan aims to double bilateral trade between the two nations to $5 billion in 5 years. Officials also said that Jordan has expressed willingness to join India-led initiatives Global Biofuel Alliance and International Solar Alliance. So, of course, viewers, this is a big breaking story that we're sharing with you at this point. Of course, the Prime Minister, of course, is in Jordan, and of course, India, Jordan are all set to double their bilateral trade. So this is the big story, of course, and we're sharing with you that India and Jordan aim to double their bilateral trade between the two nations to $5 billion in 5 years. I have Aditya Vadhavan joining me with more details. Aditya, what more can you tell us? Well, absolutely. Indeed, if you see, in Vijay, there was definitely, Vishali, what the PM has said that, we remember the brave soldiers whose courage and sacrifice ensured India had a victory in 1971. That steadfast resolve and selfless service protected our nation and etched a moment of pride in our history. The day stands as a salute to their valor and a reminder of their unmatched spirit. Their heroism continues to inspire generations of Indians, and completely, when Prime Minister makes such statement, indeed, it is a very, very proud moment for the armed forces of the country and the entire people of India. Vishali. Aditya, stay on with me. Now, honouring soldiers who fought in the 1971 Indo-Pak War on Vijay Divas, the External Affairs Minister S. Jaishankar took to X to pay his tributes to the valour and sacrifice of our soldiers on Vijay Divas. He added, the famous victory of 1971 and the enduring achievements of our armed forces remain a timeless inspiration. Aditya, of course, a big moment there. The more we thank our Indian Defence Forces, the lesser it is. What more can you tell us? Definitely, from all across the ministerial levels, we are seeing now Foreign Minister S. Jaishankar now has paid tribute to the valor and sacrifice of our soldiers on Vijay Divas today. The famous victory of 1971 is still echoing, in the ears of the people of India and definitely all the ministers in the government. So indeed, Vaishali, indeed, it's a very, very proud moment. We are remembering the sacrifices made by the soldiers, who laid down their lives for the country, so that the citizens are able to, live peacefully. So indeed, that can never be forgotten, and definitely their names have been engraved, in history, and they're, as we call them, Amar Jawan in Hindi. So indeed, it's a very, very, poignant moment at this juncture, and we could expect some more reactions to pour in support of the martyrs, who sacrificed their lives for the nation. Vaishali. All right. Of course, a big day, Aditya. I mean, how can anyone forget the valor and the sacrifice? There have been multiple films also that have been made on the 1971 Indo-Pak War. Now, Aditya, of course, we are sharing with some posts that, of course, Jaishankar, the S. Jaishankar has put out on X. Are there any other posts that you're seeing online? Definitely, many ministerial levels and definitely many ministers are,
definitely. Remembering the martyrs who laid their lives for the country, and definitely we could expect the same as the day progresses, because since it's just morning, we could expect by the day's end we could expect more, even from the politicians from the opposition party, and definitely also the other ministers will also are expected to share such posts on X, in remembrance of all the martyrs who laid down their lives for the country. Vishali. Absolutely, Aditya. In fact, every day should be, Vijay Divas, because we must never forget what our Indian Defence Forces do for us so selflessly. And now moving on. Now, in the latest update coming from the Bondi Beach shooting case in Australia, we're learning that Australian and Philippine authorities are investigating a trip investigating, of course, a trip the Bondi Beach gunman made to the Philippines just weeks before Sunday's terror attack. The NSW Police Commissioner Mal Lanyon confirmed the father and son traveled to the Philippines last month. According to the Philippine Bureau of Immigration, Sajid Akram and Naveen Akram arrived together on November 1st from Sydney. Their stated destination was Davao, a city considered a gateway to the southern Philippines. Sajid entered the country as an Indian national, while Naveed entered as an Australian citizen. I have Belly Thomas joining me with more details. Belly, what can you tell us about this latest development? Vaishali, the suspects of the Sydney's Bondi Beach terror attack had visited the Philippines. The father and son duo identified as 50-year-old Sajid Akram and 24-year-old Naveed Akram had visited the Philippines in November, is what the police have learned, and the reasons for the trip are being investigated currently. And Islamic State flags also were found, which were homemade, that were found in the vehicle registered to the young suspect. The police have also found out that the vehicle also contained improvised explosive devices, and the Prime Minister of Australia, Anthony Albanese, had said that the attackers were motivated by the Islamic State ideology. And the Philippines authorities have confirmed that the Akrams arrived together in the country on November 1st, 2025, with Sajid using an Indian passport and his son using an Australian passport. The father-son duo listed their final destination as Davao, a major city on the southern island of Mindanao. They left the country on November 28, flying back to Manila en route to Sydney, is what the Bureau of Immigration and Deportation have learned, and they have revealed it. Mindanao, the second largest island in the Philippines, is home to several Islamist insurgent groups and has long been a hotbed of insurgency against the Philippine government. In 2017, the ISIS-aligned militants took over the city of Marawi, sparking a bloody month-long siege. An Immigration Bureau spokesperson, Dana Sandoval, has also said that Sajid was an Australian resident and an Indian national. He had travelled to Philippines on an Indian passport, is what is coming out on the latest, Vaishali. Belly, stay on with me. Now, the father and son accused of being behind the deadly Bondi Beach mass shooting spent nearly the entire month of November in the Philippines. Now, the country's immigration department has confirmed, with Sajid Akram entering the country as an Indian national. Akram and his son Naveed, who allegedly killed 15 people and wounded dozens of others at a Hanukkah celebration on Sydney's Bondi Beach, arrived on 1st November, with the southern province of Davao listed as their final destination. Belly, this is a new development. What more can you tell us? Absolutely, Vaishali. So this is a shocking revelation that the Philippines authorities, the Bureau of Immigration and Deportation have revealed of late. The Philippine authorities have confirmed that both the father-son duo had arrived together in the country on November 1st, with Sajid using an Indian passport and his son Naveed Akram using his Australian passport. And the father-son duo listed their final destination as Davao, a major city on the southern island of Mindanao.
They left the country on November 28th, flying back to Manila en route to Sydney, is what the Bureau of Immigration and Deportation have revealed. And Mindanao, the second largest island in Philippines, is a home to several Islamist insurgent groups and has long been a hotbed of insurgency against the Philippine government. And in 2017, the ISIS-aligned militants took over the city of Marawi, sparking a bloody months-long siege. And Immigration Bureau spokesperson Dana Sandoval also has said that Sajid was an Australian resident and an Indian national who had travelled to Philippines on an Indian passport. Back to you, Vaishali. You know, Belly, what's interesting is that, you know, Australia has very stringent laws when it comes to guns. And, you know, of course, the security measures there are very tight as well. Are we getting any information on the fact as to how these two men got past all these security measures, laid their hands on guns? What more information are you getting? So according to the Australian authorities, these men who had licensed arms is what is being revealed as of now. But the police are still investigating as to how they managed to get the ammunitions and if somebody is stacking a lot of ammunition like this, then obviously there would be a kind of a radar on them. So this is what is being investigated as of now, what we are told. And since it's a licensed gun, there was no actual suspicion on them as to they were going to get involved in such a terror-related terror activity. This is kind of making the government to relook on their strategies onto how they can make stringent laws for issuing gun licenses to citizens who seek for it. So they are kind of looking into how can the gun laws be revamped so that the weapons don't come into the hands of such radical elements, Vaishali. Thanks, Pelli, for joining me. And now, viewers, we're learning that during PM Modi's 2-day state visit to Ethiopia, he will hold wide-ranging discussions with his Ethiopian counterpart, Dr. Abiy Ahmed Ali, on all aspects of India-Ethiopia bilateral ties. We have visuals from Ethiopia as the country prepares to receive the PM Modi for the first time. And I have Aditya Vadhavan joining me with more details. Aditya, what more can you tell us? Well, definitely, today Prime Minister Narendra Modi is in Jordan and is expected to, attend the India-Jordan Business Summit. And we could expect major, Prime Minister Narendra Modi has several, meetings lined up, very engagements lined up. And definitely, yesterday, Prime Minister Narendra Modi met with the King of Jordan. And definitely, large trade deals around the since the US President Donald Trump has imposed 50% tariffs on India, considering the fact that at this juncture it is very essential that India forges trade relationships with like-minded countries like Jordan, and now post Jordan is also expected with countries like Ethiopia and Oman. And if you see the departure statement of Prime Minister Narendra Modi, we saw how he said that India has civilizational ties with Jordan, Oman and Ethiopia. So definitely, this is a win-win situation for both India and Jordan, and definitely we could expect. And now, viewers, we're moving to the India News Munch 2025. Sachin Pilot is speaking. ओवरसाइट और एक जवाबदेही तय करने के लिए लोगों को हमने यहाँ इकट्ठा किया दिल्ली में, और आप मानेंगे लाखों लोग यहाँ पर आए क्योंकि उनके जहन में सवाल उठ गया कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो हमारी सबसे बड़ी अमानत है, मतदान का अधिकार और मतदान, हमारा वोट में नाम है कि नहीं, हमारा वोट डल रहा है कि नहीं, हमारी वोट गिनती हो रही है नहीं, उस पूरे में एक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। तो इस आह्वान को लेकर हम लोगों ने आयोजन किया था और बड़ी संख्या में लोग आए। जो रिस्पॉन्स, मैंने बहुत रैलियाँ अटेंड करी हैं, लेकिन जो रविवार को रैली थी जिसमें जो एक लोगों के मन में बात थी कि उनकी बात को करने वाला कौन है, और कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया कि भाई ये पूरे देश में हो रहा है तो कम से कम सरकार को, इलेक्शन कमीशन को एक
अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। तो इस सिलसिले में आयोजन किया था और हमने संकल्प लिया कि हमने हस्ताक्षर किए हैं, हमने अभियान चलाया है, देश भर में रैलियां प्रोग्राम करें, लेकिन राजधानी में हम लोगों ने आयोजन कर कर ये साबित करने की कोशिश की है कि देश में इलेक्शन कमीशन जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं और आपको अल्टीमेटली जवाबदेही जनता को आपको देनी पड़ेगी। इस बात को हमने साबित किया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। प्रिया, अब मंच आपके हवाले करते हैं। प्रिया सहगल, एडिटोरियल डायरेक्टर न्यूज़ सब हमारे बीच आ चुकी हैं। प्रिया जी। थैंक यू एंड थैंक यू सचिन, आई मस्ट से शुरू में कि आपने इंडिगो को भी बीट कर लिया ऑन टाइम अराइवल से। थैंक यू फॉर कमिंग सो मच ऑन टाइम। लेकिन एंड टू कीप द ट्रैफिक थिंग गोइंग, कल मुझे बताया लोगों ने कि कल जो ट्रैफिक जैम हुआ था अकबर रोड में, उसके जिम्मेदार सचिन पायलट थे। आप लोगों को लॉन में मिल रहे थे, इसकी वजह से काफ़ी लोग रुके आपसे बात करने के लिए एंड देयर वाज अ ह्यूज। कांग्रेस की रैली में देश भर से लाखों लोग आए थे। अब सर्दी के दिन हैं, जो दिल्ली आया है, शाम हो गई थी, बहुत से लोग वापस नहीं जा पाए थे, तो कुछ लोग रात को रुक गए थे। और जो कार्यकर्ता देश प्रदेश से आते हैं, उनका एक मन होता है कि दिल्ली में लोगों से मिलें, नेताओं से संपर्क करें, तो उस काम को हम हमेशा करते हैं। इसलिए हर रैली के बाद कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात कर कर हालचाल पूछना, और लंबे समय के बाद मुलाकात होती है उन दूर दराज के इलाके से आए हुए कार्यकर्ताओं से, तो अच्छा रहा। और मुझे लगा कि जैसा मैंने पहले कहा, इस आयोजन के माध्यम से कम जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं, जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि इस देश में भारतवर्ष का नाम एक सबसे बड़े लोकतंत्र के नाम पर हम प्रसिद्ध हैं, उस क्रेडिबिलिटी पर कहीं कलंक ना लगे, ये कम से कम उनको अब जिम्मेदारी से निर्वहन करना पड़ेगा। और ये मैं बताऊं, हम SIR और ये जो इलेक्शन कमीशन वगैरह के बारे में आज से पहले कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, गड़बड़ियां दिख रही हैं, एक मकान में 200-300 लोग दिख रहे हैं जो जिंदा हैं, उनको मरा हुआ दिखा रहे हैं, नाम अगर कट रहे हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि सवाल को उठाया जाए। और मुझे खेद है कि इलेक्शन कमीशन ने आज तक भी कोई भी स्पष्टीकरण या कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब अब तक दिया नहीं है। लेकिन ये जो डिबेट अभी चल रही है, आप कह रहे हैं सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया नहीं है, होम मिनिस्टर ने तो अच्छा जवाब दिया था, उनको काफी तारीफ। एक मिनट, हमने सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन से, तो गृह मंत्री जवाब क्यों दे रहे हैं? डिबेट तो आप ही ने इंसिस्ट करी थी, यही तो सरकार कह रही थी कि हम कैसे देश जवाब के दें। सामने इन आंकड़ों को रखें। लेकिन माफ करना, इलेक्शन कमीशन किसी दल, किसी पार्टी, किसी नेता, किसी विचारधारा से बंधी नहीं है। दे आर अ न्यूट्रल प्लेयर। उनकी जिम्मेदारी है कि वो अनबायस्ड होकर काम करें। वो लेफ्ट हैं, राइट हैं, सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन इज अ independent constitutional body of a sovereign republic where it is their responsibility to conduct fair, transparent and satisfactory elections. प्रिया जी, कुछ साल पहले हम अखबार में पढ़ते थे कि निर्वाचन आयोग पहाड़ में, रेगिस्तान में जानवरों पर मशीन लादकर बैलेट बॉक्स लाकर ले आते थे। 3-3 दिन पैदल चलते थे पगडंडियों में, ताकि कोई दूर दराज इलाके में कोई एक परिवार रह रहा हो, उसकी वोट छूट नहीं जाए। मतलब इतना गंभीरता से हम लोगों ने इस इलेक्शन को हमेशा रखा है। और अब हम देख रहे हैं, चंडीगढ़ में आपने देखा, कैमरा के नीचे इलेक्शन ऑफिसर वोटों को गड़बड़ी कर रहा है, वोट कट रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जो निर्वाचन होता है उसकी प्रक्रिया को बदल दिया गया। जो वोटिंग के दिन CCTV फुटेज का कैमरा होता है, उसकी रिकॉर्डिंग आप 45 डेज में डिलीट कर रहे हैं। पर ये तो पुराना परंपरा थी कि विद इन 45 डेज यू हैव एन ऑब्जेक्शन। पेपर बैलेट के साथ भी यही परंपरा थी और ये अब CCTV में भी यही हो गई है। कोर्ट में जाएंगे 2 महीने बाद, कोर्ट बोलेगा प्रमाण दीजिए, इलेक्शन कमीशन ने प्रमाण नष्ट कर दिया। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो निर्वाचन होता है, उसकी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस रहते थे। अब वो बदल के रख दिया, उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। अब 2 के बहुमत से आप मर्जी जिसको बना दीजिए इलेक्शन कमिश्नर। अब ये कहा है कि आपको जीवन भर इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। ये इम्यूनिटी जो है प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि इलेक्शन कमिश्नर को ये इम्यूनिटी दी है कि आप अपने कार्यकाल में और कार्यकाल के बाद भी